तो एसक्यूएल सीए जो है ना, अगर हम इस डेफिनेशन से जाते हैं, ठीक है, तो इस पे वो यही बता रहा है कि ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट इज ए स्पेशल नॉन विजुअल ऑब्जेक्ट that function as the communication area between PowerScript and database, right? तो जी ये जो डायग्राम है वो डायग्राम एक्चुअली वेरी क्लियर है, ठीक है। लेट्स जी सपोज कि ये ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट है, ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट क्या है, एसक्यूएल सीए। जी हम एसक्यूएल सीए को ही ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट नाम देते हैं। तो इंटरव्यू में कभी ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट करके ही पूछा जा सकता है कि ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट। तो अब हमें इस पे दिख रहा है कि यहाँ पर एक एरो जा रही है डेटाबेस पे, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि इस पे हमारे जो है ना कुछ कनेक्शन पैरामीटर्स जाते हैं, जी ठीक है। अब हमारे अगर हम देखेंगे ना, तो इसमें क्या बता रहे कि ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, मतलब कि इवन प्रॉपर्टीज भी पूछ लेते हैं कभी कभी इंटरव्यू में कि एसक्यूएल, ट्रांजैक्शन ऑफ हाँ, ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट की कितनी प्रॉपर्टीज हैं, और मतलब मेन मेन प्रॉपर्टी के बारे में बता दो, जैसे कि डीबीएमएस डेटाबेस यूजर आईडी, और मतलब कि डीबी पास लॉक लॉक आईडी क्या होते हैं, मतलब कोई ये मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है इस पे, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। जी ओके, तो अब मैं अगर मैं इस पे एक्सप्लेन तुम्हें करना चाहूँ तो इस पे क्या होगी इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट देखते हैं, ठीक है, और इसके टोटल कितने हैं, टोटल कितना कह रहा है कि वो 15 है, राइट। जी 10 आर यूज टू कनेक्ट टू द डेटाबेस, जिसमें जो ना 10 जो है ना डेटाबेस से कनेक्शन के लिए है, जी ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ 5 है वो रिटर्न्स पे में क्या मिलता है हमको रिटर्न पे, जी ठीक है। तो ये जो है हमारा ना, जो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। जी तो एसक्यूएल कोड और एसक्यूएल रोज एनरोज, ओके, एस फिर एसक्यूएल डीबी कोड, एसक्यूएल एरर टेक्स्ट, ठीक है। जी तो अब हम लेट सपोज कि इस पे मैं देखता हूँ, देखो मुझे जो है ना पावर बिल्डर के एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करना है, राइट। तो जी मुझे क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल सीए का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दिस विल हेल्प टू कम्युनिकेट फ्रॉम पावर बिल्डर टू डेटाबेस। ओके तो जो मेरा डिफॉल्ट डेटाबेस है, लेट्स सपोज ये मेरा डिफॉल्ट डेटाबेस है, जी ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जो ना एक क्वेरी लिख देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल कर देते हैं तो रन हो जाता है, ठीक है। जी अब यहाँ पर ये मुझे मुझे पूरी टेबल्स दिख रही है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट इंटेंशन क्या होगा कि मुझे ना ये ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट्स की पास करना पड़ेगा, मतलब राइट, उसको जी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, जी जी ठीक है। तो अब जो है ना एसक्यूएल सीए डीबीएमएस, राइट, तो हमारा जो डीबीएमएस है वो डीबीसी है, जी ठीक है। फिर इसके बाद में ऑटो कमिट फॉल्स है। जी फिर अगर तुम्हें पढ़ना है कि क्या होता है डीबीएमएस, तो डीबीएमएस के बारे में लिखा हुआ है कि द DBMS identifier for your connection for a complete list of identifiers for the supported सपोर्ट database interface, right। जी मीन्स कि तुम कौन सा डीबीएमएस का मतलब क्या होता है कि कौन सा आप डीबीएमएस यूज कर रहे हो, कि ओरेकल यूज कर रहे हो, कि आप एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हो, कि जी मतलब माई एसक्यूएल यूज कर रहे हो, कि साइवेस यूज कर रहे हो, ठीक राइट। तो डीबीएमएस इज मतलब एक तुम्हें जो है एक प्रोडक्ट का नाम बताना पड़ता है, राइट। फिर उसके वो जो आइडेंटिफायर्स वगैरह हैं उनको डिफाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू व्हाट डेटाबेस यू आर यूजिंग, राइट। जी तो यदि आप ओरेकल यूज कर रहे हो तो फिर ओरेकल के आइडेंटिफायर्स जो भी होंगे एट्रीब्यूट्स हमको लेने पड़ेंगे, ठीक है। और डेटाबेस क्या होता है फिर तुम्हारा जो है ना,
अब यहाँ पर क्या है कि हम स्पेसिफिकली डेटाबेस नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, बट हम लेटर हम लोग देखेंगे, एक एक कनेक्शन बनाएंगे जब, जी ठीक है। तो अब यहाँ पर डीबी पाम क्या होता है, ऑटो कमिट प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट। ऑटो कमिट प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ना ये एक ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, जी ठीक है। तो जो कमिट होता है ना हमारी, जब क्वेरी, जब हम मतलब कि डेटाबेस पे ऑटो कमिट तुमने पढ़ा है, नहीं सर, अभी नहीं पढ़ा। तो ये जो है ना एक मतलब कि जब हम डेटाबेस पे जाते हैं, राइट, तो जी एक मिनट, तो डेटाबेस पे हमें जो है ना, लेट सपोज ये डेटाबेस है, ठीक है, और डेटाबेस पे हमारे जो मेन मेन फीचर्स हैं, जो पिलर्स हैं, राइट, तो वो क्या जी होता है, स्टैंड ऑन दी डीडीएल, राइट, जी और फिर क्या होता है, डीएमएल, जी राइट, फिर टीसीएल और डीसीएल, राइट। जी तो हमारा जो ना ये मतलब ये जो पार्ट है ना, ये कमिट एंड रोल बैक, जी वो ट्रांजेक्शनल ऑब्जेक्ट पे आता है। ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शनल जहां पर जो है ना ये क्वेरीज रन होती है, राइट। जी मतलब कि जो सीक्वल सर्वर होता है वो जो है ना ऑटो कमिट नहीं होता है, हमें मैनुअली उस पर कमिट करना पड़ता है। जो ओरेकल होता है वो ऑटो कमिट होता है, तो उस चीज को हैंडल करने के लिए हमें जो ना ऑटो कमिट प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ता है यहाँ पर। जी समझ में आ रहा है? तो तुम्हें मतलब कि वो साथ साथ में डेटाबेस के बारे में भी ये पढ़ना है और इसका प्रैक्टिस भी करते चलना है, ठीक। ठीक है, कि ठीक है सर। ये कितने हैं और इनके अंदर क्या क्या कमांड्स आती हैं। एक बार मैंने एक यार वो सेंड किया था तुम्हें व्हाट्सएप पे, एक है सर मेरे पास। है ना तुम्हारे पास में, वो उस पर पूरा क्लियरली लिखा हुआ है, राइट। तो अगर तुम उसको देखोगे ना तो वो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक। और डेटाबेस ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पावर बिल्डर से टिल बिग डेटा पर जाने के बाद में, राइट। तो जी तुम्हारा ये पावर बिल्डर है स्टार्टिंग, ठीक है, जी बट अभी तुम यहाँ पर जाओगे फिर कुछ दिन के बाद में यहाँ पर भी मूव होगे, तो इसकी वजह से इन सब चीजों के ऊपर ही पूरा आईटी इंडस्ट्री घूम रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं मतलब हम्म, कि सीक्वल के ऊपर, अभी आप डेटाबेस के ऊपर, ठीक है, बिग बिग हमें जो डेटा इंजीनियरिंग होती है फिर इसके ऊपर, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स होता है, तो वो फिर ठीक। अलग टॉपिक है, उस पर हमें डिस्कस नहीं करना है अभी, ठीक है। जी तो तो उस जी चीज को हैंडल करने के लिए हम ऑटो कमिट की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर तुम देखोगे ऑटो कमिट फॉल्स है, राइट। और फिर इसके बाद में डीबी परम पे एक ही स्ट्रिंग पास करते हैं हम लोग, ठीक है। जी ये तो मतलब कि एक स्टैंडर्ड स्ट्रिंग होती है, ठीक है, हर एक डेटाबेस के लिए, वो जी हमें पास करना पड़ेगा। फिर हमारा एक यूजर आईडी और पासवर्ड है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये यूजर आईडी और पासवर्ड देना पड़ता है हमको, ठीक है। जैसे यूजर आईडी, तो वो पता है ना कि हम जब डेटाबेस कोई भी लॉगिन करते हैं तो उस पर यूजर और आईडी देना पड़ता है, ठीक है। जी तो ये वही चीज है। अगर अब हमारा ये मतलब कि अगर मैंने ये कनेक्शन किया, लेट सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, इसको कॉपी करके सेव किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर मैं रिट्रीव कर रहा हूँ तो ये मुझे एरर आ रही है, राइट, क्योंकि मैंने जो ना एसक्यूएल सीए जो ट्रांजेक्शन है ऑब्जेक्ट उसको कॉल ही नहीं किया मैंने, डायरेक्टली कर रहे हैं। राइट। जो 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 है ना डेटा, वो पावर बिल्डर डेटाबेस से कनेक्ट होगा और इसके बाद में फिर वो मुझे जो भी मैं फेच करना चाहता हूँ, जो भी मैं रिकॉर्ड फेच करना चाहता हूँ, फिर वो बाद में रिट्रीव होने देगा, राइट। जी बट अगर मैं कंट्रोल जेड करके फिर कंट्रोल एस करके करता हूँ इसको और फिर रन करता हूँ ना और रिट्रीव करूंगा तो फिर ये सेव नहीं होगा।
अभी यहाँ पर है नहीं, अब मैंने रन किया तो ये देखो अभी ये रिकॉर्ड आ रहा है, जी क्योंकि ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट इज द मेन ऑब्जेक्ट which will help पावर बिल्डर टू कनेक्ट डेटाबेस, डेटाबेस। राइट। तो ये हमारा एसक्यूएल सीए का काम होता है, ठीक है। जी अब जो है ना एसक्यूएल सीए, जब लेट सपोज कि मेरा जो है ना डेटाबेस कनेक्टेड हो गया, ठीक है, जी डेटाबेस कनेक्टेड हो गया, राइट। तो जी लेट सपोज मुझे जो है ना इस पे जो है ना ये जो रिटर्न हमें जो मतलब कि डेटाबेस से क्या रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, अगर जी हमें उसको देखना है, राइट, तो फिर हम लोग कैसे देखेंगे उसको, राइट। तो हमको ये कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। जी ठीक है, अभी अभी कुछ एरर नहीं आ रहा है इस पे, जी क्योंकि वो कनेक्ट हो जा रहा है। अगर तुम डीबग करके भी अगर इसको देखोगे ना तो insert point है, राइट। तो डीबग करना आता है ना, फॉर्मेटर को कैसे डीबग करते हैं। जी तो अभी ये रिट्रीव हुआ, फिर इसके बाद में कि यहाँ पर है, ये ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, insert suppose Hello, Lalish. हमारे प्रसाद। Sorry to sorry to joining late. I did not respond your call, and I did not attend at that sharp 7 o'clock. Okay, okay, okay. So, but it is by default at 7, right? I This, don't. I don't actually. Okay, okay. I didn't but shoot. by default the timing will be 7. Okay. Okay, If it is there any no prior like instruct that communication, right? okay, okay, So by default it will be 7. okay, okay, Okay. So here we discussed about the SQLCA. What are the uses? okay, Okay. So what I did, I have created this SQLCA connection. Okay. And after that, I was created one data that window first. Sorry, not this one. Okay. I have created one window. Okay. That that window name I have given employee detail. Okay, and after that I have created one more object inside the uh,
this window means this is the data window object. So how I can create, right? Rinku, you know, right? जी So before going to start, okay, this SQLCA, because SQLCA is used to communicating, right, from PowerBuilder to the database. But before that, if I am going to use this, okay, I have to create one window first, okay, and after that, let me remove from here this. Okay, so let me remove and save. I have saved. Uh, okay, so how we can let me run this application first. Okay, so what I'm doing, I'm retrieving the employee detail information from the database. Hari. So, Yes. so PowerBuilder is providing that default database. Okay, so if you go below this EAS demo DB, okay, demo DB is provided by PowerBuilder for the learning perspective. Okay, so inside the table, I'll get all the table list. Okay, and so here there is one table that employee, this one. This detail I want to fetch with the help of PowerBuilder application. Okay, one of application I wanted to create where I want to see all the employee information, and after that, if it is required, I will change, I will delete, I will modify this table from the PowerBuilder. So did you get the motto what I am going to do? Hari? Yes. So this is my database, and I want to check the record. I will write one select query. Table name. Employee, right? Employee. That for executing, you can press Control and L. Yes. So it will automatically run and give the result. So these are the all columns: employee ID, manager ID, first name, last name, okay, city, state, all the information is there. And whatever query you want to write, you can write here. Let's suppose if I want to fetch only Matthew details, so that I can write the name of, means give the where condition, where the name is, the column is the employee F name, right? जी From here you can check column as well, EMP. वन And same. See, so we have two record inside this table.
One is employee ID this, and the second one this, right? But both are related to different city. Okay, so like that, this information is available, and the same thing I wanted to do with the help of Power Builder. So what required, what things required if I want to fetch, if I want to see this employee detail into my Power Builder. Okay, so what things, first things required, right? So here we required, let's suppose this is my DB. Okay, DB, and I have employee table. Okay, and this I want to fetch in the Power Builder application, right? So what I will do, I will create one window, right? Because I want to see, right? So first I will take window, and window is the object. So first object is required window, right? Where data will come? Data will come into data window. The window is used for the to see anything, right? Means for making visual, or you can say window is used for holding any kind of objects, right? So for this is the first, and the second object is required data window. So I will create one data window. Data window. Okay, got it? So let me remove this first. I'm deleting this. Okay, and I have created this window already. Okay, so you also need to check errors. Okay, it always give, if you will do something wrong, so always it will give that error behind the sorry, that below this application, right? So I have removed data window, right? And I'm going to save, right? But it is giving that compiler error, that undefined variable d1 dw1, because I have defined here this one dw1. Let me comment. Okay, now so Hari Prasad, you know, right, how you can create window? How you can create window? Go to file and new, Go to file, new, and go to PB object. PB object, and select this window. Window, right? Window and create. So my window is already created, so I am not going to create window again. Okay. What is required? Second thing is required data window. Okay. So remember one more thing. Always
always your data will come Database. come into database. Always, it is thumb rule. Okay, that data window, maybe you select different because the type is there, right? We have this type of data window, so you can select any data window according to your requirement, but always data will come into data window. Got it? जी sir. So I am selecting this one, grade. I will select grade, click OK. After that, here we need to select the data source. Okay. जी. So the second this data source, that term come into picture, right? Yes. So what are the data sources? Okay, what are the uses for quick select, SQL select, query external, and store procedure? Okay, these things you need to prepare, or you can go through whatever help I have given, right? Go through, learn what it is. We will discuss later. Okay, so I am selecting this SQL select. Okay, so here if you will see that data source, what data source is doing, data source is redirecting redirecting me to select the table from the database, right? Got it? So this is the use of data source. So I am selecting employee because I want employee data. I will select here, open. Okay, after that here whatever column you want to see in your PowerBuilder window, that you can select one by one. So I want all. Okay, or if you want to left some columns, you can left. Let me, I'm not going to all, I'm going here, right? Zip code, phone number, and status. I'm only taking this column. After that, you need to return from here. So this is the layout. If you want to change, you can change. Okay, so I'm not changing. I'm keep it default setting. Next, finish. Okay, so here it is created my data window. Okay, once I finish, it has been created. So as you know, each object have some property, and data window is also object. So this data window also have some properties. So what are the properties? These are the tab. Okay, so you can change here according to your requirement, right? So if you want to change the background, you can select here. Let me, I'm giving this sky. Okay, and after that you can adjust the column here as per the whatever view you want, right? What it look like. So you can drag and drop. It is adjustable, you can say. Okay, so I did this, and after that it is
it is fine to me. Okay, it is fine to me. So here, if you want to see, so that you can also check that column, whatever the column you have selected, right? So I have selected 11 column. It is giving below employee name and sorry, that table name and columns, Column. right? So now I'm going to save. Control S. You can, if you will press Control and S, it will give pop-up to save your object name. Okay. So as naming standard, I am giving data window. Means DW start or means stand on data window, right? So it will be convenient that what you are going to save, means that object, because lot of object is there. So what object means what object you have used for what purpose, right? So naming convention is important. So I'm giving DW EMP, right? You can give anything, but it is relevant to my requirement. Means I wanted to see employee data, that I have given. You can click OK. So once you will click save or means OK button, that object automatically will come here, right? It means that data window has been created. So my data window has been created. Okay. So what I will do, I have created data window. Okay. So let's suppose I'm calling only window, right? So it is giving me like this. Means if I'm retrieving, it is not giving anything, because I have not used data window in this window, because window is used for the displaying something, right? So it is a main window, and means window is using for the holding any controls, any object in front of you, right? So what I will do here, I will drag directly my data window in the window. It is adjustable, so you can adjust as per your requirement, right? So let me, one more column is there. Status, right? So what I did now, I have dragged this data window in the window, right? Let me save and run again, right? So now my data window object is placed on my window. Got it? Now I'm retrieving record, but it's not retrieving, right? Nothing is happening, right? So what I will do, I will write some code, PowerBuilder code. I will write some code to retrieve EMP data. Okay. So PowerBuilder is a very that short code language, you can say. It is not required long means lines code. Okay. So here I will write 2 lines only. Okay.
this one and this one. Okay, so I am using, okay, so DW, what is a DW? Data window 1. So what is a data window? It is saying that DW means data window, but what is exactly? Object name, right? Object name, right? DW1 is a object name, Name. right? So where you will get this name? Where you will get? So if you will click here, means inside the data window control. So if you will check in the right, this one, Okay. and this you can change. This you can also change. I have given one. If you want, you can give the same name, whatever you have given here. I'm giving EMP now. Okay. So what I need to do, I need to change here, because now I have given this one, right? So object name, set trans object is a function. Okay, and retrieve is also a function. So both function you need to means learn what it is, how they use. Okay, so what I'm doing, I'm passing SQLCA. Okay, oh, what is SQLCA? It's a connection. Connect. Yes. So transaction object, right? So here I am passing SQLCA because it will be connect my PowerBuilder application to database, Data. right? That's why I have passing, because function always expected parameter. You know this thing, any function. So set trans object is a function, and function always expected parameter. ये जो हम पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं ना, उस पे हमें कोई ना कोई पैरामीटर पास करना पड़ेगा. तो लेट सपोज कि मैंने SQLCA पास कर दिया. ओके, जी. और मेरा जो सेकंड फंक्शन है वो रिट्रीव है. रिट्रीव क्या करता है? व्हाट इज वर्किंग? यू हैव टू गो थ्रू विद द हेल्प. मींस कुछ नहीं करना है, यू जस्ट कॉपी and paste here and get the all detail. Sorry for bit disturbance. Okay, so you just go through, and here if you will see retrieve method, right? So let me display and go all the definitions, how it is used, what are the use. Okay, right? So here retrieve function is used for the retrieving something from the database. Okay, so I'm using here two function. One is set trans object, and this one retrieve. I'm not passing any parameter. Okay, so let me save and run.
So when I click, it is retrieving, right? It is retrieving, but we can see only 1, 2, 3, right? But if I scroll, it has all the record. Okay, it has all the record. So let me add a scroll bar. Okay, this one here that H scroll horizontal and V scroll means vertical. I click both option, Control S, Control R, and retrieve. So now I am getting this scroll bar, right? So means PowerBuilder is very uh, quick language where you can design your application in a very quick time. Okay, and you don't write big lines of code, right? So PowerBuilder is a very what we can say Lightweight. lightweight or elegant, right? And it is easy to developing your means small applications, you can say, right? So it is very quick, right? But if you are going any other language, you have to write a lot of things. First you need to create this all window, right? Because window is an object and this is visual object. So other languages you have to write a lot of code to write. You have, if you are going into .NET, you have to use a lot of different languages like HTML, C Sharp, blah blah, right? But in PowerBuilder, nothing is required. Only 2 lines of code is enough to retrieve the data from the database. Okay, so where I have written this code, I have written because button I have used button, right? Button is also object, right? So this button also have event list, right? So I have written in the click event, right? Because what I am doing click, right? So the same event I need to use, right? So if I click the second button, it will close, right? Because I have written the that close object. Code is a function. I am passing my object, so it will be close, right? So close function is used to closing any object, right? Open function is used to open any object. Got it? So so I have I'm debugging in front of you so that you can understand that how a PowerBuilder will go, right? So Control D and T. Let me click this one. Okay. Will not. I think I have not. Here. Right. So if you will see, first is came here, and so if you want to see the results, right? Watch, see.
So this is giving 0, right? SQLCA.SQL code equal to 0 means it is perfectly connected. There is no issue with the database. Got it, Rinku? जी सर. Means 0 is a success. 100 means there is some issue, means first row not found. If it is coming like -1, so means there is issue. There is issue from the database side. ओके, सो जो एसक्यूएल एरर टेक्स्ट होता है, एसक्यूएल एरर टेक्स्ट क्या करता है, वो जितने भी स्टैंडर्ड एरर्स होती है ना, उनको शो करता है. और जो भी एसक्यूएल डीबी कोड क्या होता है कि जो भी वो रिटर्न करता है वो इसको ट्रैक करता है. तो ये डिफरेंस पता चल गया ना सर? अब समझ में आया, कल नहीं आया था. क्या क्या कल नहीं आ पाया था वो आगे. ये वाला हाँ हाँ. तो वो जो है ना, ये जो मुझे लेट सपोज अगर मैं जो है ना, ये अभी मैं तुम्हारे सामने अभी एक कोड पे जीरो तुम्हें मिल रहा है. सपोज कि यहाँ पर जो है ना, ऐसे कर देते हैं इसको, ऐसे ये देखो आ रहा है. तो ये जो एरर आ रही है ना, मुझे जो मैसेज आ रहा है, क्या रहा है, नो डेटा वाज फाउंड टू सेटिस्फाई द रिक्वेस्ट, राइट? अब मैं इसको डिबग करता हूँ. ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ. तो अभी तुम देखोगे कि वेयर कंडीशंस लगी हुई है यहाँ पर, तो मतलब कि ये मेरा जो ये SQLCA है ना, वो माइनस आ रहा है, इसकी वजह से इस पे जा रहा है. ये देखो, ये माइनस आ रहा है. माइनस आ रहा है कि मेरा स्ट्रिंग, ये जो है ना, ये जो मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग है, मैंने इस पे गलत किया है ना. तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर गया. अब ये एसक्यूएल कोड, ये डीबी उसका कोड उठाएगा और उसका डिस्क्रिप्शन प्रिंट करेगा. ये जो इसके डिस्क्रिप्शन प्रिंट होकर के मुझे दिख रहा है ना, वो मैसेज ये आ रहा है, राइट? ये जो कोड आ रहा है ना, एसक्यूएल कोड, वो कोड कहाँ से आता है? ये आता है. समझ में आ रहा है? हाँ सर. हाँ, तो ये इनका दोनों यही यूज है. तो जो SQLCA की जो प्रॉपर्टीज हैं, राइट? So SQLCA is a very important object in the PowerBuilder, okay, and it is also very important for the interview perspective, okay. So you have to go through with all the properties and use, okay, and you can also I think understand that how it is react, right? How it will react means if you do any mistake in the code or from the database, right? So it will be tracked with the properties, right? Means with properties it will get the errors and descriptions and show to user, right? What was the issue, right? So Hari Prasad, did you get? Yes. So this is first demo application we have created, very small. We are not did much things, okay. First I have created application, okay. Application is object
object have event list, right? So I remember this thing, application object have only these event list, means I one, have a doubt two, in this area. sorry, Demo test and demo both are applications or that this one, this icon, right? This icon represent application object. what about two lines? This one, right? Demo test. This one, na? No, the above. Above this one. Yes. So when we are creating any power builder application, so this is the valid question actually. Let me show again. Actually, we had discussed earlier, but no problem. So when we are creating any application, so first we require workspace, Okay. right? Workspace, and this is the symbol of workspace. Okay. Second we required to add target, right? Second we require to add target. Okay, so this is the that symbol of the target. Third we required library. Okay, so this is the symbol, and the fourth is required application object. Application object, It is a folder structure. Huh? right? This is the folder structure, means automatically will take care by Power Builder. Okay, and we called this window uh, tree view. Okay. Okay, so we call this tree view. Okay, so any confusion? And after that, means once application is there, because this is the first object which will be connect with all other objects, all the rest of objects, you can say, right? So on top of we have created window, right? We have created data till now. Any doubt? Okay. So you remember this icon is also very important. Okay, it represents itself what we are. Got it? Okay. So in the application object, we have only these events. Okay, and other object have lot of events. So remember these things: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only 6 event is there in the application object. So this is the interview question. They are asking what are the use of all events of the application object. Okay, so this is the interview question. So you go through when open will use, when close, when connection begin, connection end, idle, system error. Okay, go one by one and check. So where I have written in the open event, right? Open event, I have created this SQLCA object, and I called connect using SQLCA. Okay, and after that I have written this if condition to test SQL code uh, return, because if you will see this diagram like that, see,
means we will pass parameter, but DBMS is also return some response, right? So I am checking that response with the help of SQL code property. Okay, so I have written this one, means if have any issue with my connection, it will show these error. Got it? And after that, it will be open my object, window object. Till now here any issue? Hari Prasad and Rinku. No, it's fine for me. No issue, right? So sit today and make a connection and create for customer table. I have given this task to you. Means I'm giving this task. Okay. So here if you'll go, we have tomorrow I will see. Okay. This customer table is there, right? So create one window Okay. for customer. Okay, will be tomorrow. Okay, bye.